What is sentence? A sentence is a group of words that makes a sense. जो एक मीनिंग देता है, सेंस देता है. सेंटेंस एक्सप्रेस कंप्लीट थॉट. सेंटेंस हमेशा एक कैपिटल लेटर से शुरू होता है, ये तो आपको सबको पता है. एंड एंड्स विद अ सिंबल. चाहे फुल स्टॉप हो, चाहे क्वेश्चन मार्क हो, चाहे इंटेरोगेटिव, है ना. Yes. अंडरस्टूड. या एक्सक्लेमेटरी मार्क हो. क्लियर. यहां तक समझ आया सबको? Yes, ma'am. A sentence has at least one verb. एक वर्ब होता ही है, मतलब एक्शन. What the noun or a pronoun or a person, जो सब्जेक्ट है वो क्या एक्शन कर रहा है. क्लियर. क्लियर. Sam went to the store. Here went is That is verb, ma'am. yes, went is verb. So now we will be moving ahead with types of sentences. Types of sentences क्या होते हैं? There are four types of sentences: declarative, imperative, exclamatory and interrogative. ठीक है. किसी को पता है declarative sentence क्या होते हैं? No, ma'am. Yes, ma'am. Negative sentence is a simple sentence. Yeah, ma'am. Declarative sentence is a simple sentence. ठीक है. It is a simple sentence. It gives information or state of fact. Ends with period, मतलब full stop. Okay. She is reading a book. So it is a declarative sentence. Clear? Yes. Clear to everyone? Yes, ma'am. Declarative. Ends with period, ये तो मैंने आपको अभी समझा दिया. Tells the reader about something. Reader जो पढ़ रहा है उसको कुछ बताते हैं, कुछ information देते हैं. Clear? Clear? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Mary has a cat. Tell a declarative sentence, make a statement. It ends with period, full stop. The boy is happy. क्या बता रहे हैं ये? Boy क्या है? Happy. Happy. तो ये explain कर रहे हैं ना. The people are running. तो यहाँ पे run क्या है? Run is a run is a action. Run is a students. I am asking something. कुछ तो बोलो. Action. So make one each. हर कोई एक एक declarative sentence बताओ. Everyone. Sonia, make a sentence. Declarative sentence. सोनिया. सिंपल सेंटेंस बनाना है. ये तो इजी है सबके लिए बनाना. अमीशा, मेक अ सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस. अमीशा. राजेश, मेक अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस. सिंपल सेंटेंस बनाओ. स्टूडेंट्स में कुछ बोल रही हूँ. व्हाई स्टूडेंट्स आर नॉट रिप्लाइंग? क्या रीजन है?
The boy is place. Pritha. Pritha. Make a sentence. Pritha, are you there? Shashra. Students, why you all are not replying? क्या आपको समझ नहीं आया? अगर नहीं समझ आया तो मेरे से दोबारा पूछ सकते हो. I am asking something, students. Please reply. Arun Yadav. Make a declarative sentence. And he is running. Yes, right. Or I like ice cream. Simple sentence बनाना है. My dog is sleeping. ये भी declarative है. Explain कर रहे हैं. I think it is clear to everyone. Yes, ma'am. Okay, now moving ahead with imperative. It is like to give command. Imperative sentences are, it tells someone to do something. Okay? It is like command और request भी कह सकते हैं, ठीक है? एक तो होता है ऑर्डर, तरीके से ऑर्डर देना, एक होता है रिक्वेस्ट भी करना. मतलब मगर तुम कह रहे हो ना सामने वाले को, है ना? इट गिव्स एन ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस और इंस्ट्रक्शंस. ओके. Usually ends with period, sometimes with exclamation mark. Close the door. अगर please close the door, ये होगी request. Close the door, it is a command. मतलब अगर मैं सामने वाले को काम करने को कह रही हूँ ना. Yes, ma'am. Clear? Yes. Please help me. So it is a Request. So here you can see an imperative sentences gives an order. It ends with period or exclamation point. ठीक है? Go to your room. Stop talking. ठीक है? So it is a imperative sentence. आया समझ? Yes, ma'am. Sit down. It is a क्या है ये? Command. It's an order. Sit down. Please wait here. Please wait here. Request. क्या है ये? Request. Request. Okay. Advice. Drink. Advice में क्या आ सकता है इसमें? Drink plenty of water. So it is a advice for everyone. Nowadays summers are going on. Please drink plenty of water. If I will use please drink plenty of water, it is a request. है ना? Okay, students. Yes, ma'am. Clear to everyone? Say yes or no. Yes, ma'am. Abdul, make a sentence. Abdul. Amisha Kanwar. Amisha Kanwar. Sonia.
Yes, ma'am. Make a sentence. Imperative sentence. Make a imperative sentence. He go to the market. क्या क्या क्या? Please repeat. Amisha, what were you saying? Can you please repeat the sentence? Amisha, can you please repeat the sentence? Rajeshwari. She asked, come to my home. She asked. Command. Imperative. I am not talking about declarative. Imperative में command होती है. Command Okay. होती है. Order होता है. Advice होता है. Request होती है. ठीक है? Give me a glass of Please close the door. हाँ, please close the door. Yes, it is right. It is a request. You are requesting that person, है ना? Kindly pass the salt. It is also a kindly pass the salt. request. It is also a request. I think now it is clear. Yes, ma'am. Any doubt? No, ma'am. Imperative तक कोई से को कोई doubt? Okay. Moving on with exclamatory. Exclamatory तो I think it is easier for everyone. Exclamatory कौन से sentences होते हैं? It is like strong feeling. Okay. Show great emotion. Strong feeling. Surprise. बहुत ही ज्यादा surprise. Joy, खुशी. Anger. Ends with exclamation mark. ये तो सबको पता ही है ना? An exclamatory sentence express strong feeling. जो मैंने अभी आपको बताया. It ends with exclamation mark. ये तो क्लियर है सबको? क्लियर? Yes, ma'am. कोई हूं नहीं, कोई हाँ नहीं, कोई यस नहीं मैम ऐसे. Yes, ma'am. स्टूडेंट्स बी एक्टिव इन द क्लास. अदरवाइज मैं कैसे पढ़ाऊंगी आपको? खुद सोचो ना. हाउ विल आई गेट टू नो दैट यू आर लिसनिंग टू मी? Okay. It ends with exclamation mark. For example, I can give you what a beautiful day with exclamation. Understood? एक्सप्रेशन है ना मैंने कहा बहुत ही सुंदर दिन है. व्हाट अ ब्यूटीफुल डे. इसमें क्या है? वाह कितना सुंदर दिन है ना? क्लियर? Yes, ma'am. क्लियर? ओ नो आई फॉरगॉट माय कीज. टेंशन में आ गई ना. ओ नो यार आई फॉरगॉट माय कीज. दिस इज अ एक्सप्रेशन. आई एम शोइंग माय स्ट्रॉन्ग इमोशन. क्लियर? Yes, ma'am. अब आया समझ? ओके. मूविंग अहेड विद इंटेरोगेटिव सेंटेंस. इंटेरोगेटिव तो आई थिंक सबको पता होगा. Yes, ma'am. एंड्स विद क्वेश्चन मार्क है ना? Yes, ma'am. It is a question. Interrogative sentences are ask a question. It ends with a question mark. Who is your teacher? Have you ever seen flying fish? Clear? It ends with question mark. ये तो आपको सबको पता ही होना चाहिए. Okay. Now this is the exercise. I will call each and every person's name. You have to give me the answer. Clear?